आप देखोगे कि अपने एंशिएंट सनातन ऋषिज ये ऑलरेडी हजारों साल पहले डिस्कवर चल चुका था कि नवग्रह हैं करके, अभी रिसेंटली साइंस पर डिस्कवर किया है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। साइंस के साथ भी अपन चल रहे हैं, और जो आपको जो गिल्ट फैक्टर जो मैंने आप मेरे दिमाग में था, हो सकता मैं रॉन्ग होऊंगा, बट आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। थैंक यू। या गुड पॉइंट्स। फिर टॉपिक पे आते हैं वापस। अगर किसी को टॉपिक पे बोलना है, एंड इफ यू आर नेक्स्ट मुस्लिम आई विल गिव यू प्रायोरिटी। कोहिनूर, आर यू नेक्स्ट मुस्लिम? Well, can I explain myself, please? Okay. Go ahead. Thank you, first of all, for giving me the mic and giving me the opportunity to speak. मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो डैड थे ना, वो मेरे ख्याल में 10 साल के थे जब उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। तो हमारे घर में इस्लाम सिखाना मना था, तो हमें ना इस्लाम सिखाया गया था, ना हमें मुस्लिम बनाया गया था हमारे घर में। जैसे मैं रेज हुई हूँ, आई वाज रेज्ड एज एन एथियस्ट, बोर्न एथियस्ट। मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। तो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। जो एक्स मुस्लिम्स, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स जो आप कह रहे हैं ना नेचुरली रेसिस्ट हैं, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मेरे ख्याल में वो नेचुरली रेसिस्ट नहीं है। हम लोग, मी इंक्लूडेड, आई विल इंक्लूड माई सेल्फ इन दैट ग्रुप बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी डिसेंडेंट। तो मैं ये कहती हूँ कि ये ना नेचुरली रेसिस्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हैं हम लोग अपनी ही कम्युनिटी से फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इतनी जाहलियत में है। इंडियंस आर नॉट इन दैट मच इनटू, इंडियंस का हिंदुइज्म का जो रिलीजन है वो आपको ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता जैसे इस्लाम हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। तो हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम रेसिस्ट नहीं हैं किसी भी रिलीजन के खिलाफ। हम फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमारी ही कौम इस रिलीजन की वजह से इतनी पीछे है, इस डॉगमा की वजह से, इस कल्टिश लाइक अप्रोच टू लाइफ की वजह से। डाई स्टॉप, कैन यू प्लीज लेट मी स्पीक? आप मुझे ना थम्स डाउन या आपने मुझे रिबटल करना है कर दें, बट यू आर इंटरप्टिंग माय थॉट, प्लीज। थैंक यू। Kohinoor, please ignore all these reactions. As long as people are not unmuting themselves and interrupting, you should be agnostic to their Yeah. feedback, right? Okay. So what I'm saying is that that I think they're not racist. I think that is a wrong word to use. It is our frustration. मेरी माँ मुसलमान है कि मेरे डैड एथियस्ट बने थे, लेकिन मेरी माँ फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करती थी रिलीजन को, और अब भी करती हैं। आई डोंट हेट माई मदर, आई एम नॉट अ रेसिस्ट अगेंस्ट माई मदर। My mother is my mother, regardless of what religion she believes, and my aunties and grandmas and grandpas. Kohinoor, can I ask you a pointed Sure, question, absolutely, if you don't please. mind? Do you think that despite of the leaving Islam, the worldview and the cultural upbringing of Islamic culture doesn't leave ex-Muslims? That's a very good question. It depends on the individual. अब मैं आपको अपनी तरफ से बता सकती हूँ कि I have absolutely zero love or respect for Islam. I don't follow it. I don't see any value in it. There's nothing there for me. मैं तो involved हुई हूँ social media में maybe about 4 years ago. इसलिए because I saw how Muslim people, especially women, कि ये women की subjugation कैसे होती है, their rights are being infringed on, उनको civil liberties भी नहीं उनको दी जाती. I got involved because I want people to live free. भाई आपको अगर if you can't even speak against your own prophet, मैं कनाडा में रहती हूँ, I say Jesus fucking Christ all the time, public में भी कहती हूँ। हमारे यहाँ पे कोई blasphemy laws नहीं है, मुझे कोई जेल में नहीं फेंक रहा, मुझे कोई मार नहीं रहा। तो पाकिस्तान में तो आपको मार देते हैं। ये सिखों के हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं वहाँ पे, you know, ये minorities के साथ क्या कर रहे हैं? These are the reasons why I came to social media, because So culturally, do you think you're still a Muslim or not? absolutely not. No. So your father was ex-Muslim. Was he culturally Muslim or He he was was not. not?
Okay, so how did you perform his last rite? And if you don't mind sharing that His detail last right, when he मेरे died. डैड ने कहा था कि नमाज क्योंकि मुसलमानों में नमाज पढ़ी जाती है नमाज जनाजा जनाजा नमाज यस नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो मेरे डैड ने मुझे कहा था कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी मेरे फ्यूनरल पे अगर किसी मुसलमान ने आना है आए नहीं आना है ना आए मेरे डैड ने मुझे ये भी कहा था कि सिक्योरिटी को हायर करना है और मुझे जाके ना बस दफन कर देना है आई डिड एग्जैक्टली व्हाट माय डैड टोल्ड मी टू डू मैंने And you have his burial site, right? You still go to his burial site? डू आई नो आई हैव नॉट बीन पर मैं जाना चाहूंगी बिकॉज वहां पे मैंने जो ग्रेव Why didn't he choose cremation instead? It's the less real estate because blocking way we of looked into that the disposing of cost stuff. is same So, but you're still holding a real estate, right? it doesn't Even if matter you're dead. so you're burning fuel to burn a body I'm holding real estate Yeah. So the fuel burning is done once and all, yeah and but that has the people have very. different ways of burying So and I'm just still hang on trying to you understand. asked me a Do you question let think me he's answer still? and please मुझे आप Yeah, mute but नहीं I think it comes from an Islamic worldview, right? आप मुझे mute नहीं करें no it is not No, I Islamic haven't done. no I no haven't thank you muted you. no it is not Islamic it is universal कुछ लोग bury करते हैं कुछ लोग burn करते हैं Christians भी bury करते हैं Jews भी bury करते हैं But your ancestors were not bearing it, right? I assume you are from Pakistan, so you must be from Indian subcontinent. Your ancestors were not doing it, right? well I don't go that far back into my ancestors because I'm a See, that is Canadian the problem, right? I mean, do you think that is because it is very hard to shake off the No, you're cultural wrong. No, you're mark? wrong. I will tell you point blank that you're wrong. I know you may have a point to prove, but I believe you are wrong. ये cultural नहीं होता. It is dependent on the individual. अब मेरे बाप ने जब मुझे कहा था कि मेरे लिए जनाजा नहीं पढ़ना, तो that is cultural. हमारे तो सारे ने जनाजा पढ़ते हैं. No, that's religious. तो burial is cultural or religious? Burial is cultural. It comes from your No, where you it's grew not up, right? cultural. So your No, it's not environment. cultural. Burial is religious in Islam and Christianity and in Judaism. You Right. have to No, bury no. your dead. Disposal of a dead body is a cultural way of No, doing it's things. not. Yes, It is a religion can religious change way it. of doing things. I tell you how. No, I Okay, tell you do what. tell. If the people convert to Islam from in Indian subcontinent, earlier their ancestors were, cremating the Yeah, but body, that's not the or point. That's their not the point. The point is that Hindus were burning them. We were burying them. And no, सुनो 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 but that didn't no happen. I know what That you're didn't saying happen before तो जो Islam. क्रिश्चियंस थे वो तो अपने पहले से भी बैरी कर रहे थे और जो जूस थे वो उससे भी पहले बैरी कर रहे थे Yeah, so that's why I'm saying you are adopting a religious practice and you're making it a नो culture नो later इट on इज in अ retrospect. रिलीजियस प्रैक्टिस हम जब मुसलमान बने हैं तो हमने बैरी करना शुरू किया जब हम हिंदू थे तो हम भी बर्न Exactly. कर रहे थे तो ये रिलीजियस So that प्रैक्टिस is है burning. हैंग No, ऑन no. यू जस्ट आपने Hindu, मेरा पॉइंट प्रूव Hindu, क्रिश्चियंस मैं बताता क्रिश्चियन हूँ. आपने मेरा चर्चिस पॉइंट बर्न नहीं करते थे अंटिल वहां पे प्लेग आया और बहुत मास लोग मर गए तो पेड़ों की कमी हो गई थी तो दे हैव डिसाइडेड कि अब हम दफन करना शुरू करते हैं एक पॉइंट नो दैट्स सेकंड नॉट पॉइंट ट्रू कि दैट्स हिंदू में नॉट ट्रू दैट एक इज सेकंड नॉट एक ट्रू हाँ यस इट इज जस्ट रिसर्च नो अबाउट इट इट इजंट एंड सेकंड पॉइंट अरे डिड यू सेकंड जस्ट पॉइंट से लेट मी शट कंप्लीट अप मी डिड यू लेट जस्ट लेट से मी शट जस्ट अप कंप्लीट आई हैव सेड लेट डिड मी यू कंप्लीट जस्ट माय से Koinur, शट पॉइंट अप टू Koinur. मी Okay, guys, don't say each other anything unpleasant. We are having a very fair, objective discussion. No name calling. Hardik, make your point. We are trying to understand what is cultural and what is religious. So, if you are adopting any practice after converting to a religion, you are not cultural, right? You are actually adopting a religious practice. But if you are doing it before you accepted any religion, just like that was happening in that environment where you come from, that is more of a cultural and organic practice. So go ahead, dystopia, मेरा and मेरा leave the सेकंड meeting पॉइंट to ये now. था After Hardik, hang on, hang on. Let me set the order here. Let me settle. Hardik, hold on, right? I think you interrupted. You said what you wanted to say without raising your hand, and that's not okay, right? Koinur was on the mic. Koinur, I'll let you finish your point, and then I'll go to dystopia and then come to Hardik. Koinur, go ahead. there's a lag yeah तो No problem. मैं ये कह रही थी कि जब हम हिंदू थे when we transitioned from being Hindus to being Muslims
पहले हमारे भी जो एंसेस्टर्स थे वो भी वही हिंदुइज्म की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया तो in Islam, burying the body is the ritual of disposing of the body when you're dead. तो ये क्रिश्चियनिटी में भी था, तो ये जुडाइज्म में भी था, तो this was a religious practice, not a cultural practice. लेकिन yes, you're So right. when you buried your father, you're following the religious practice, right? That's what I'm saying. That's the point. No, I'm not following the religious practice. I was following. I know, but you're still नहीं नहीं burying hang on, let me, the यार मुझे burial of your आंसर तो father करने is दो, linked with your आंसर तो Islamic करने दो, practice, right? मुझे आंसर तो कर लेने दे। मेरा आंसर ये है कि my dad said do whatever the hell you want to do with me. तुम मुझे bury कर सकती हो, burn कर सकती हो, साइंस को दे सकती हो, तुमने जो करना है करो। मेरी मम इमोशनल थी और मेरी मम ने जो मुझे कहा कि आई वांट यू टू, मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं रिलीजियस हूँ फरहाना, आई वांट यू टू bury your dad. मैं अपनी माँ को हर्ट नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसलिए किया जो किया। और मेरे डैड ने ये कहा था कि अगर मेरा जनाज़ा हुआ, मुस्लिम नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी वहाँ पे, और नमाज़ नहीं पढ़ी गई थी। आई हैड टू हायर सिक्योरिटी, और मैंने मस्जिद में नई बॉडी लेके मैं गई थी डैड की, हॉस्पिटल से सीधी मैं फ्यूनरल होम लेके गई थी। अक्सर मुसलमान मस्जिद लेके जाते हैं, मैं मस्जिद में नहीं अपने डैड की बाड़ी लेके गई थी। मैंने जो किया है, एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने डैड की भी कुछ गल्लां रखी, मैंने अपनी मम की भी कुछ गल्लां रखी। माय मम इज़ स्टिल अलाइव। मैं नहीं देख सकती थी हर रोज़ कि मेरी माँ ये सब। मेरे तो डैड ने ये भी कहा था कि कनाडा में अब असिस्टेड सुसाइड लीगलाइज्ड होगी, तो वो तो असिस्टेड सुसाइड करना चाह रहे थे। मेरी मॉम इतना रोई, उन्होंने मेरे डैड को मना कर दिया कि नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। सो माय डैड डिडंट डू दैट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार, मॉम भी कोई चीज़ होती है ना, वो रो पड़ती हैं, एंड यू कैंट इग्नोर देम। तो हमारे घर में ये चक्कर हुआ था। इट वाज़ अ वेरी यूनिक केस in the sense कि मेरे डैड को he saw himself as just flesh, blood and meat and water going back into the ground and being a part of nature, or being buried or given to science. अब मैंने भी अपनी बॉडी साइंस को देनी है, तो मैं मेरा तो कोई एसोसिएशन नहीं है किसी भी रिलीजन से, या कोई डॉगमा Okay, नहीं है मेरा। आपका point आ गया. Okay, Kohen, can hold on to that. Great. Thank you for explaining all these things. That is my point, right? Your worldview is still either through your family, either through your practices. It will never leave you. The Islam never No, leaves it you, does even though leave you you. leave It Islam, does. No, you're wrong. I right? disagree with So you. hold on, Kahin. We'll come I back to that. disagree We'll with come back you to that. wholeheartedly with I respect. want to. You do not. Please wait. I'm respectfully asking you. Please wait. I'll come back to you. You spoke for a whole time. I want to hear from Dystopia, and then I'll come back to you. Dystopia, can you speak? यस ये इस्मत चुगताई का नाम आपने सुना होगा. You must have heard Ismat Chugtai name, who was from progressive Urdu writer group, and she preferred to be burnt. ये इस्मत चुगताई का बोल रहा हूँ, जो मुस्लिम फैमिली से आती थी और उसने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी है. मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ. यहाँ पे नसरीन गोराप नाम ले लीजिए. उनके हस्बैंड 70s में कन्वर्ट हुए थे, मतलब 80s बन गए थे 70s में विजयवाड़ा में. तो वो खत्म हो गए थे, फौत हो गए कुछ 10 साल पहले या 8 साल पहले या 10 साल पहले फौत हो गए थे. वो भी बर्न हुए, और उनके जितने भी जो भी था उनका, वो आंखें थे, जो भी थे, बॉडी डोनेशन जो था वो बॉडी डोनेट कर दिया गया, और जो बचा कुचा शव है वो बर्न कर दिया गया. तो ऐसे अमतीन एग्जाम्पल है मुसलमानों के. खुद आप हिंदुस्तान में देखेंगे कई एग्जाम्पल है मुसलमानों के जो बर्न होना पसंद हुए और बॉडी डोनेशन देना अच्छा समझे. जितने भी उनके पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, जैसा आईज है, जैसा जो भी उनके लिवर है, जो भी उनके बॉडी पार्ट्स है, वो बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर दिया. तो ऐसे अमटीन एग्जाम्पल है मेरे पास. केरला में है, के है, आंध्रा के है, कर्नाटका के, मुंबई के खुद. और वो सब मुस्लिम फैमिली से आते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप भी मुसलमान थे. अब वो खुद इस्लाम छोड़ दिए सो, और वो छोड़े सो 60s और 70s में छोड़े सो इस्लाम.
तो ये बोलना कि भाई आप वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं और आप नहीं कर सके, तो भाई देयर इज समथिंग फिशी है भी भाई। अब People have choice. I don't disagree with that, right? My point is simple. Your choices are influenced by your religious background, whether if you have given up on that. absolutely, it is there on religion, absolutely, because I have a And nothing innumerable wrong in example in acknowledging front it. of you. पर इसको acknowledgement क्यों नहीं होता है कि why can't you acknowledge के that your racism is coming from your Muslim No, भाई that's background? not true You because मेरी अभी niece 23-year-old niece इसमें मरी है। बीच में बोले मेरी तो मेरी आप बोलेंगे 23-year-old niece मरी है, उसको हमने बर्न किया है। She was cremated. वो भी तो मुसलमान थी, उसको हमने क्रीमेट किया। उसने अपने विल में लिखा था कि I wanna be cremated. तो ये रिलीजियस की मैं तो आपको सबूत दे सकती हूँ कि मेरी नीस कोविड के nobody is ड्यूरिंग talking about you, nobody is talking about you, you're taking it personally, man. नो बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप ये कहते आप हैं पर्सनली कि ले रहे मुसल हैं। आपको रिलीजन नहीं छोड़ता, देयर इज प्रूफ हियर कि रिलीजन इजंट द इशू, इट इज द विशेस ऑफ द इंडिविजुअल। अब मेरी नीस है, उसने अपने बिल में लिखा था कि आई वांट टू बी क्रीमेटेड, उसको क्रीमेट किया गया। विल में लिखा क्या, विल में लिखा था उसने, तो हाँ वी अंडरस्टैंड दैट थिंग, सो प्लीज आई मीन नहीं आप No, तो बीच अगर में कोई आप विल में इंटरवेन नहीं भी करें, लिखता, आप अगर बीच में यहाँ पे तो इंटरवेन हर कोई करें, विल लिखता है, विच इज अ यहाँ पे बैड तो हर मैनर्स, कोई विल विच इज लिखता बैड है। मैनर्स, और इससे इससे कल्चर मालूम हो जाता है। इससे आप बीच में इंटरवेन करें आप, अब अभी ये भी भाई भाई मैं क्या बोलूं। एक आई मीन छोटा पॉइंट। एक ये कल्चर की बात बोल रहे हैं कि कल्चर में ऐसा नहीं है, भाई कोई भी जनरलाइज नहीं कर रहा है, पर 50 मुल्कों के ऊपर है जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, एंड इंडिया डज नॉट हैव बैड रिलेशन विद देम, इट इज ओनली पाकिस्तान दैट वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद देम, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद इस्लाम, अनफॉर्चुनेटली। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट इस्लाम, उनका आर्मी भी है, आर्मी प्लस इस्लाम है। तो अब इससे ये भी भाई कुछ भी नहीं कर सकते, स्टॉर्म कुछ भी नहीं कर सकता, हार्दिक कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वो वहां पे जो लोग रह रहे हैं वहां के लोग ही कुछ कर सकते हैं। ये मोहतरमा, पहले के मोहतरमा मेरे ऊपर पत्थर मार रहे थे, मैं बोल रहा हूँ कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। जी ऐश जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं जस्ट ऐड कर रहा था कि यू कैन नॉट, आप कोहिनूर को, फरहाना को एक्स मुस्लिम कैटेगरी में नहीं डाल सकते, बिकॉज़ उन्होंने मतलब उनके फादर ही छोड़ चुके थे। सो शी डज़न्ट, शी इज़ वेरी फेयर एक्चुअली, हैव लिसन्ड टू हर बिफोर। जितने भी मुस्लिम्स एक्स मुस्लिम में आते हैं, शी इज़ एक्चुअली वेरी फेयर। ये और मोहम्मद भी Yeah, बहुत please फेयर हैं। don't. Look, this is not personal. We are not doing anything here या personal, तो right? नहीं, आप उनको Neither उनकी we want to थॉट्स को आप प्लीज़ eulogize. No, सीरियस hang नहीं on, ले hang on. सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम No, सेइंग। no, but don't look. Talk about ideas and then individuals, right? And for the whole time, I'm discussing about the ideas and नो अभी thoughts. भाई, बिकॉज़ This is not about एक्स individuals, नॉर्मली एक्स मुस्लिम 99% उनके जैसे सोचते नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। right? I respect your love and respect for Kohinoor ji. I also like her a lot. Don't take this personal that when we disagree with her or agree with her that we are trying to question her authenticity. None of those things are intended here. The point is simple I'm trying to make. And let me reiterate the question, and those who have joined recently, you can also get benefited with this reiteration. Please mute yourself because I'm the one who's speaking right now, and I want you to listen to this carefully. My assumption, and this is assumption, okay? Don't think that this is my judgment. My assumption is, which I have heard, that Pakistani ex-Muslims, especially on Twitter space, very carelessly, without realizing, they address African people as Kala, Kalelo, Kala, Kala. And their entire the African identity for them is just by the skin, not by their culture. This happens because in Islamic society, there is no respect and value for ancestral culture, nature worshipping, tribal belief system. They think this is regressive and this should be completely eradicated. They may not think that Islam is the best, but they think Islam is better than a lot of other beliefs. So even though they have rejected Islam, but they haven't rejected the self-righteous superiority complex, which a lot of Muslims who are true to their faith suffer from. They think their belief is the supreme, and rest of the other people's
they're inferior to them in terms of their belief system, because they believe in something irrational. Islam is rational. Even if you have left Islam, your belief that other religions are uh, despicably irrational, it doesn't go away. चूड़ा So भी बोलते therefore, चूड़ा भी बोलते हैं अभी। मैं आपको huh? ऐड कर दूंगा कि चूड़ा भी बोलते हैं पाकिस्तान में, See, which is a I'll अरे racist just add a कास्टिस्ट तो है, कास्टिस्ट, अरे कास्टिस्ट तो मैं अभी तो उस पर जा ही नहीं रहा हूँ ना। casteist term है। मैं अरे मैं आप कास्ट पे तो जा ही जो नहीं रहा हूँ भी भाई, वो तो एक आपने नया जो भी टॉपिक है। स्टेटमेंट्स कही हैं मैं उनसे आपसे 100% एग्री करती हूँ। मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि पाकिस्तान में हेवंस फॉरबिड, गॉड फॉरबिड के कोई लड़की का रंग काला हो। वो तो उसकी तो बेचारी की शादी भी नहीं होने देते कि काला रंग है। तो कालियों को तो ये काला कहते हैं, वो पीपल डू नहीं, एंड बात सुने मिस फरहाना, ऐसा नहीं है। देखें, रिलीजन इस्लाम में ऐसा नहीं है। काले पीले को उन्होंने पहले दिन से खत्म कर दिया था। आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरवीन बिटवीन नहीं ऑल यार ऑफ यू। मोहम्मद देखे ना नो, इट्स नॉट लाइक दिस। नहीं, देखें, ये इंडिया जो में भी सामने है, रंग हमारे का रिश्तेदार पुतला इंडिया होता में है भी उसकी हैं शादी नहीं होती। जो ओ एक मिनट यार मोहम्मद, प्लीज थोड़ा ना एहतराम से, इज्जत से पेश आए। आप ना हाथ ऊपर रखे, मैं आपके पास आ रहा था। मैंने क्वेश्चन इसलिए रिएटरेट किया सो दैट आप लोग ना किसी इंडिविजुअल के लास्ट बयान को पकड़ के उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करने लग जाते हैं। मैं नहीं चाहता किसी इंडिविजुअल के ऊपर यहाँ डिस्कशन हो। मैं चाहता हूँ हम आइडिया पे डिस्कस करें। तो फरहाना कुछ बोल रही थी, फरहाना बोल दीजिए, उसके बाद मैं हम यही कहना जिन चाहती हूँ लोगों के कि हाथ खड़े हैं रेसिज्म उनके तो पास जाएंगे। हमारी अपनी कम्युनिटी में पाकिस्तान में है, कनाडा में है। यार ये जब रिश्ता देखने जाते हैं, कुड़ी को लबने जाते हैं, द फर्स्ट थिंग दे लुक इज के पढ़ी लिखी है, गोरा रंग है, सोनी है, यू नो। वो ये नहीं देखते कि हु इज दिस पर्सन एक्चुअली। उसके साथ बैठो, उसके साथ कोई गलबात करो, आइडियाज डिस्कस करो, लर्न अबाउट हर, के उसके हॉबीज क्या हैं। वो हो सकता है कि शी इज समवन रियली important and special. तो हमारे कल्चर में, and Mohammed, I don't mean to go against you, you're my friend, right? But मैं ये सच्ची कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कुड़ियाँ का जब रिश्ते होते हैं, स्पेशली अरेंज मैरिजेस में, जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं अमीर कितनी है, रंग कैसा है। Rang considered, fairness is considered a very important aspect in a marriage because they want to improve the genetics of the clan. Yeah, but Kohinoor, that happens in African society too. Okay, this is a baggage carried over by Huh. the colonial. Colonialism, yes, it is true. Hannah, I don't disagree on that, but I'm specific about African people. The loath, the disrespect towards African people for their culture and their identity, it is inherent in Pakistani society, and ex-Muslims are not immune to that belief. But I And will that is my entire I will point. say that ex-Muslims are less likely than the average Musliman, Oh, right? absolutely not. On this Twitter space, I have seen them and Khalistanis equally racist. In fact, Khalistanis are even more racist upfront. Uh-huh. They call me monkey and they call me chimp and monkey and all because I have an African identity. Uh-huh. But ex-Muslims are constantly, when they're discussing African people behind their back, Uh-huh. they use the derogatory Slurs word and kale derogatory log, comments and kale slurs and log, negative kale log. connotations. There is no better word in the dictionary for African people better than तो kale log. ये इंडिया में भी होता है ऐसे, या I know, but India, is it just in India में Pakistan या इंडिया में? इंडिया में कोई अपफ्रंट आपको नहीं बोलेगा क्योंकि लॉज आर हाँ. सेट। इंडिया के अंदर आप साउथ, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं ना, उनके लिए भी एक वर्ड यूज होता है जो पहले लोग यूज करते थे रेशियली, रेसिस्टली। दे वर नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट, दिस इज हाउ इंडियन पीपल आल्सो आइडेंटिफाई ईच अदर, लेकिन दैट वाज कंसीडर्ड रेसिस्ट। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। अब कोई आदमी नहीं बोलता ये बात। Well, See, the point that's here like in is Canada. that हम अब there is no किसी को N superiority word नहीं complex कह among सकते, Indians. N word नहीं किसी को कह सकते यहाँ पे. See, But I'll यहाँ make वन a टू तो वन हो सारे रहा है। आई एम कहते हैं गोइंग टू ना, लीव मैम। एनवर्ड। आप मेरी बात समझिए। पाकिस्तान एक्स मुस्लिम की बात हो रही, उसी पे रहते हैं। डोंट ट्राई टू ब्रिंग अदर एग्जांपल्स एंड मेक द डिस्कशन ठीक है. कंप्लीटली Okay, very good, everywhere, very good. right? African Shivaji, Point can I here is just add simple. to it what you said? See, Yeah, who's this? see one thing I observed is, as you're Who is absolutely this? right, as I rightly can't see said. you. Can you hear me now? Who is this? This is Sujit. Yeah, go ahead. Sujit. So as you were saying, right, this is my personal experience. The two most from within the subcontinent
the racist, according to me, and I can be wrong, are the Pakistanis and Khalistanis, which you alluded to. My theory for I that, 100% agree with my that. theory for that is both of these communities, even before Islam, right? I mean, this is a caste gets mixed into it because you see, Pakistan is majority Punjab. Punjabi Muslims are basically Pakistanis, right? And then No, Khalistanis are let's not get Punjab. there. I'm not saying this is a Punjabi issue, No, but let me That's what I said. No. This is specific to ex-Muslims. ex-Muslim, Look, but it is a one tribe at a time. One tribe at a time. right. You cannot bring You're right. multiple I mean, tribes and ex-Muslims justify are it that part they are of. Punjabis and See, this and what that. I'm trying to make here is ex-Muslims. Sujit, I gave you mic because you were interrupting and I did not stop you. So please come to the point. Are you an ex-Muslim or Pakistani? Yeah. If you do not have skin in the game, don't make those assumptions. यार कि पंजाबी इसलिए racist है. ये क्या बात होगी? नहीं, पंजाबी racist नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, the racism part came because from Central Asians, right? I mean, when did first And I racism don't came care in? यार where it comes It from. became. And I don't care You यार. don't care, but the point I'm trying to make is. No, that's not the point here, bhai. Sujit bhai, please try to understand. This is not the point where it came from and all. We are talking about the contemporary problem. We are trying to call them out. And I don't want any justification. All I'm Really, saying is, there's no okay, point of let discussion me here. just, I'll finish it up. Okay, let me make one point. The racism in Indian subcontinent started from the Muslim invasions because, they were relatively fairer than the indigenous populations, and that include indigenous populations of what is now Pakistan as well. And then since they were in power, especially in Pakistani areas, so people used to look up to them because they were the ruling class. They tried to imitate them. And then if you look at the writings of those Muslim rulers, right from Babur, all those Mughals and the Turkics, all the Turks, they are basically Turks ethnically. So these Turks had this superiority complex. They were a little fairer than them. They used to call Indians as blacks. And the same thing goes for Persians and Iranians. They used to call Indians as blacks. And this is proved in their writings from their own Persian writings. And that racism, that superiority complex got carried on over to the converts who converted to that religion. And then that is still there. And then the same thing happens when you're ruled by outsiders for centuries. You carry that oppression, right? You carry that memes subconsciously. So those subconscious memes was what made Pakistanis so racist. And then that is what made Khalistanis racist, because they also came from the same oppression. It's the same geographic area. And then ex-Muslims are part of it. Even though they left Islam, you still have pieces of it. They are 100% better than your ordinary Their practicing worldview Muslims. is inspired by Okay. their previous faith. That is the point. Thank you so much. That was a good comeback. I appreciate that. Shah Latif, your hand is up. Go ahead. हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं सुन रहा था आपकी कन्वर्सेशन के एक्स मुस्लिम, तो ये टर्म थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी। या तो आप उनको एथियस्ट कहें। एक्स मुस्लिम टर्म, अगर कोई एक्स मुस्लिम कोई गलत कर रहा है तो उसका ब्लेम भी आप लोग इस्लाम को दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब मुझे लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, इस्लाम की हर किसी ने अपनी तौर पे तशरीह कर ली। इस्लाम को हर रीजन में जो है इस्लाम आपको अलग नज़र आएगा। सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया टाइम टू टाइम, और यहाँ के जो कल्चर के हिसाब से उसको ढाल लिया गया। जैसे यहाँ कव्वाली का सिस्टम है, कव्वाली और भजन जो है वो मैच होती है। कव्वाली मैं भी सुनता हूँ, मेरे घर वाले तमाम लोग सुनते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। तो ये कल्चरल चेंज आया है इस्लाम के अंदर। अगर आप अरब कंट्रीज़ में जाएंगे आपको कव्वाली नज़र नहीं आएगी, वहाँ ऐसी कोई टर्म नहीं होगी कव्वाली। तो ये सब कॉन्टिनेंट में मिलेगी आपको। अभी रिसेंटली यार लतीफ़ रेसिज्म के ऊपर बोल सकते हो अगर कुछ, तो वो बोल लो यार आप प्लीज। तो आप रेसिज्म को इस्लाम से ही जोड़ रहे हैं, तो मैं इसीलिए उसकी रूट कॉज पे ही जा रहा हूँ ना। नहीं, हम तो पाकिस्तान से भी जोड़ रहे हैं, हम दोनों चीजों से जोड़ रहे हैं। तो मैं भी तो उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इस्लाम जब मुख्तलिफ रीजन्स में जाता है तो वो कल्चर के हिसाब से बन जाता है। मैंने मिसाल दी क्लेम किया जाता है कि इस्लाम brings uniformity between the races and people with different caste and creed, ये तो मतलब झूठ हो गया ना, it's false। इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। आपने कहा कि एक्स मुस्लिम्स जो इस तरह इस्लाम करते इज हैं, अ नॉन फैक्टर। आपका ये कह रहा है ना, इस्लाम इज अ नॉन फैक्टर, ये रेसिज्म हटाएगा भी नहीं और बढ़ाएगा भी, ऐसा कह रहे हैं आप क्या?
इन नहीं, बताइए। इस्लाम में तो देखें, इस्लाम जो जेन्युइन इस्लाम है ना, जिसकी लोगों को जेन्युइन समझ वेन्युइन की बात नहीं करता भाई मैं, अभी जो प्रैक्टिस मेरे सामने हो रहा ना है उसकी बात नहीं मुसलमानों कर को, रहा हूँ, फालतू ना बात मत तो करो। जेन्युइन मुसलमानों वेन्युइन को किसने देखा समझ है। जेन्युइन? देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए इस्लाम में जो है वो ना, इस्लाम और मुसलमान दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल को आप देखेंगे ना, यार एक अगर बात मैंने कोई, बताओ, एक बात बताओ यार, विदाउट ह्यूमन बीइंग थॉट का क्या यूज है? अगर इंसान नहीं है तो थॉट कहाँ से आया? क्या कह रहे हैं आप? अगर इंसान नहीं है तो थॉट कहाँ से आया भाई? इंसान है तभी तो थॉट है। मैं, मुझे मेरी थोड़ी बात कंप्लीट करने दें, मैं नहीं जिस नहीं, बात, आपकी बात समझ में नहीं आई। वो आप जो समझा है नहीं मुझे ये विश्व, बताइए हल्का कि थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके बोल लो उसको। मैं आप ये कह रहे हो ना मुसलमान और इस्लाम अलग अलग चीज है, तो मैं बताओ कि बिना मुसलमान के इस्लाम कौन फॉलो कर रहा है? चिड़िया कर रही है। देखिए मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ। आप अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो आप इस्लाम को ब्लेम तो नहीं कर सकते ना उसके अरे पीछे। तो मैं क्या करूंगा उस इस्लाम का जो इंसान के अंदर नहीं है? किसी मतलब मार्स के ऊपर बैठा हुआ इस्लाम, मुझे उससे क्या लेना देना भाई? उसको गलत सही कहने से फर्क क्या पड़ता है? और दूसरा पॉइंट जो नहीं मैंने दूसरा उठाया नहीं, पॉइंट कि आप जब इसको नहीं, डिस्टिंग्विश कैसे मैं कर जब सकते हैं? आप ये मुझे बताइए, आप इस्लाम और मुसलमान को अलग कैसे कर सकते हैं? बिना मुसलमान के इस्लाम कैसे रह सकता है, ये बताइए। इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही है कि सबको नहीं आ रही है? नहीं, किसी को नहीं आया, प्रोसेसिंग चल रही है अभी। ठीक ठीक, जी कोई बात बिल्कुल नहीं नहीं लतीफ चल साहब, रही है, आप मगर जुड़िए थोड़ी देर बाद। मगर रेसिज्म की बात कर रहे थे तो सही हदीस है हमारे पास, बुक 49 हदीस 33 है, ये जिसमें स्लेव लड़की है और वो सैयद, खास तौर से सैयद लिखा हुआ है कि सैयद को अच्छी तरीके से सेवा करी उसकी। स्लेव गर्ल, लतीफ स्लेव गर्ल। साहब थोड़ी देर रुकिए आप। हाँ लतीफ साहब रुकिए थोड़ी देर, में आता हूँ आपके पास। ये डिस्टोपिया भाई कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं कोहिनूर जी के पास हाँ, जाता हूँ। वो ट्रोजन, मैं मेरा ये बुक मेरा नंबर 49। मेरा पॉइंट अरे भाई, मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि आप लोग, अगर एक बंदा इस्लाम छोड़ चुका है, आपने एक्स मुस्लिम की टर्म जो है मुतारुफ करा दी, तो उसको एथियस्ट कहें ना आप उसको, तो वो अपने आप को यार जो कहता है हम वो लतीफ, यार कहेंगे ना, एक्स हमको ये। मुस्लिम, वन सेकंड यार विश्वा, इनको थोड़ा करेक्ट कर लो यार। एक्स मुस्लिम देखो, हिंदू भी तो बन सकता है ना छोड़ने के बाद, वो क्रिश्चियन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है यार। वो एथिस्ट ही क्यों बनेगा, ये बताओ आप। तो फिर भी उसके पुराने मजहब को आप ब्लेम करेंगे, नए को नहीं करेंगे। फिर तो आप हिंदू तो हो एक्स जाएंगे हो ना। गया ना यार, एक्स हो गया ना। एक्स मुस्लिम तो इसीलिए रखा हुआ है ना, क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस से निकला है अच्छा, बाहर। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर हम इंडिया में अगर देखें, जैसे मैं हूँ, हम 500 साल पहले या 1000 साल पहले जाएंगे तो हम हिंदू थे, सारे सारे हिंदू थे। लतीफ एक तो बात फिर हम बताओ, ये इधर उधर की बातें छोड़ो, एक एक बात हिंदू बताओ, तुमको कहलाएंगे क्या? तुमने कभी कहा ना कि इस्लाम अलग है मुस्लिम अलग है? आपने कहा ना अभी। हम तो मुस्लिम को क्वेश्चन एक्स मुस्लिम को कर रहे, उससे फिर तुमको क्या तकलीफ फिर तो मैं एक्स हिंदू हुआ, सारे मुसलमान एक्स हिंदू। है? यार ये आदमी सुनता ही नहीं है। लतीफ भाई, लतीफ भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या तकलीफ है अगर हम एक्स मुस्लिम के ऊपर क्वेश्चन करें? उससे आपको क्या तकलीफ है, एतराज क्यों है आपको, ये बताइए। बात ये देखिए, एतराज की बात नहीं, मैं करेक्शन कर रहा हूँ, भले आप बोलते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। करेक्शन तभी आप करेंगे ना जब आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, तो एतराज हो गया। भाई जरूरी थोड़ी कि मुझे बुरा लगे, मैंने एक चीज फील शाह की। लतीफ तो फिर भाई, आपको करेक्शन क्यों करवाना है? तो फिर करेक्शन क्यों करना है? छोड़ दें शाह आप। लतीफ भाई, वो खुद अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं, तो हम क्या करें? मैं फिर आपसे यही सवाल नहीं कर नहीं, रहा हूँ ना। मतलब आपको क्या, आपका पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा। इतनी देर से आप इधर उधर घूम रहे हैं, कभी कहते हैं मुसलमान और इस्लाम अलग है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि बिना मुसलमान के इस्लाम कैसे हो सकता है, तब आप कहीं बताने की बात है, फिर जवाब तो नहीं दे उनको पाते। सबको एक्स एक्स हिंदू, एक्स क्रिश्चियन, आप एक्स ज्यू, उनको जाके एक्स फला। बोलिए ना, शाह साहब, आप जाके उनको बोलिए। आप हमको क्यों बोल रहे हैं? वो तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर। आइडेंटिफाई जो आदमी अपने आप को, अब एवी साहब अपने आप, रियल नेम मुझे पता नहीं, मैं उनका नाम यही लूंगा अभी, क्योंकि इसी नहीं तरीके मेरे से वो अफ्रीकन, अपने आप को, मैं अफ्रीकन आइडेंटिफाई करता हूँ अपने आप को। हाँ अफ्रीकन, अब अफ्रीकन ही बोलूंगा ना भाई मैं उनको, क्योंकि वो नाम उन्होंने वही रखा अपना। तो जो नाम, जो इंसान ने जो नाम रखा, हम उनको वही बोलेंगे। तो पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम बोल के एक
एक टर्म दे दिया एक, तो वो गलत कहाँ है वो? अब जैसा शाह लतीफ है, अब शाह लतीफ आप कुछ शाह लतीफ ही बोलेंगे भाई, वो खुद लतीफ अपने आप भाई को आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो लतीफ हम भाई आप थोड़ा लतीफ से सुनिए, थोड़ा चिल करिए, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अभी कोहिनूर जी से बात करते हैं, अभी कुछ चले करना चले, चाहते हैं कोई बात। बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं लतीफ भाई आप आते रहिएगा ऐसे ही, गुल गुल जलेबियां घुमाने हमारे पास। आइए कोहिनूर जी बोलिए। कोहिनूर है क्या? Farhana, you can speak. हाँ, Farhana has forgotten her new name, that's why we call her Kohinur. She doesn't respond. I can't raise my hand. I'm on a PC. अगर हमको मौका मिले तो. Who's that? Yes. Trojan? Yeah, go ahead. Okay. A few things. पहले तो फरहाना जी कह रही थी about the cremation burial being religious. I just made a comment also. It can be personal, cultural, religious, societal. ये unimpeachable argument है. इस पे कोई इसका कोई exception नहीं है. It can be anything. So दूसरा कि ये racism और religion का I think there is a confusion. दोनों अलग अलग चीज, उसका relationship है ही नहीं. I mean, religion, कोई भी religion racist हो सकता है. Americans are racist, let's say mostly Caucasians towards black. Problem at hand is the ex-Muslims. I know that the whole world is racist. Problem at hand, we are discussing this. This is the But specific why only segment ex-Muslims? Why be having no, a that narrow is view? then no. Yeah, why What not? is the goal? What is your goal? No, why not? But Why what not? is your goal? That's my question to you. My goal is to question their belief, that their worldview is still mad with their Islamic belief, which discriminates against the black people and especially But you Africans. have not answered my question, there is Avi. no law. Avi, you have not answered my question. Trojan, My question was, why have a narrow view towards ex-Muslims or Muslims? What is no, the goal? we are not Why having a not? narrow view. Why not? We are not having a narrow view here. There are no laws in Pakistan pertaining to racism. That is why we are narrowing it. In India, we do have this problem of racism and casteism, but we have laws against अरे it. भाई, There इंडिया is में racism in the Western that's a countries. whole different ball अरे game यार, where you say there are अब laws, the laws which are not enforceable or. Yeah, look, there is an intention to curb systematically the racist, name calling against any community. Okay, there is an intent, and this is working out. And I gave an example that India is the only land where Africans were brought as a slave, but they became kings, and they were given. Recently, they are given political, empowerment. They are given national recognition through Padma Award and all. They have been protected as a scheduled tribe. Their rights are protected. Nobody can take their land. Africans are classified as scheduled tribe, enjoys the most favorable position in as per the Indian Constitution. So they get reservation in the job. So there is affirmative actions in order to not just empower them, but also curb any kind of hatred, discriminations against them. There is an intent, and it is working out. Therefore, you see our president, India's president, Draupadi Murmu. Look at her face. She's tribal. She looks just like another African tribal person from Kenya, Tanzania, or Congo. So point here is don't question this topic. If you have a problem with the topic, you are free to leave the room. The topic is very simple. Ex-Muslims, and I said that again, ex-Muslims, they may have left Islam, but their worldview is still made by Islamic value system, which looks down upon anybody who follows their ethnic, cultural practices, tribal practices. They look down upon them. See, fundamentally, what you've said, I cannot disagree with you. You see, Avi, you just gave an example as a counter. You gave the example of India. Well, then I can counter argue saying the Indian ground reality is very different than what you just presented. Okay, we are aware of the news also. But this is not question about India. You mentioned India. That's what I'm Let's saying. talk about You mentioned ex-Muslims. India. Yeah, let's talk about ex-Muslims. This is not the question You about mentioned India. India. I did not. Let's talk about no. Okay, fine. Let's talk about ex-Muslims in India. Tell me why ex-Muslims, sorry, not in India, Pakistani ex-Muslims, why they are racist towards African people. Ignorance. I don't know how else to answer. Ignorance. Racism is ignorance. Don't you think that Islamic worldview preaches them that? Generally speaking, you are right.
in Islam there is more ignorance than compared to other religions. I'll grant you that. Simple as that. The point here is, if you have given up Islam, you are not giving up the worldview of Islam, and that's why you're carrying on the same ignorance. That is the very question I'm asking. I'm challenging this. This is not to corner or narrow down I anyone. agree with you there. This is what I'm saying. People who have given up on Islam, the reason was they were more aware than the general population following Islam, right? They have proven themselves to be above that. They have used rationality, reason, right? So you'll have to grant them, you have to give them that credit कि वो उससे ऊपर उठ चुके हैं ना. So they will naturally, normally, being less ignorant, be less racist. That is my claim. Can you counter that? No, that is not true. That's the point. That's why this is exactly the contradiction I'm pointing out. Chura is being used. Chamar and Chura is being used by a Pakistani ex-Muslim. Can you counter अरे that? भाई हमारे एक्स मुस्लिम तो हमारे इसी फोरम में तो हैं, कोहिनूर जी हैं, फरहाना जी हैं, वो बताएं. Individuals की बात नहीं हो रही है यार. We are talking about this community which exists on Twitter space who claim themselves holier than thou, which is nothing different than what Islam is. I agree with you. Preacher I would say. 100% agree. देखो, अभी Twitter space, will you grant me this कि ये जो Twitter space है ना, it is not representative of the population. यहाँ पे तो चाइलों But का I'm हुक्म here. आता है. I don't. But I understand, bhai. But I'm here. But I'm here. I'm not outside. And this question I'm asking, where the problem is not outside. अरे भाई तब तो फिर तो clarify कर दो ना. Let's say कि Twitter space में जो आते हैं What did I just say? Where are you standing? Look, we are not talking about the universe. In Mars, if somebody is doing, we're talking about it. Where we are in this metaverse of Twitter space. I'm questioning that this question is posed in metaverse of the Twitter space. Why do we need constant justification to, shield and justify these people? Please don't do that. The question is simple. Shielding, bhai. No, but then why do you have to put? Why do I have to put the qualifiers? Qualifiers is unnecessary. All I'm saying is, why not be more precise? If indeed you said that you. This is precise. What more do you want to say? This is the most precise question I have put here, and I have put a question mark. Look, if I was making a judgment or assumption, I wouldn't have put the question mark. I'm asking question mark because this is a query I have. This is not a judgment. Okay. मेरे को सिर्फ एक लाइन कहना है. I'll just take 30 seconds and then I'll be done. My only point is, if indeed you are saying that you are talking about X space, a subset, well, then the topic should be why Pakistani Muslims, ex-Muslims on Twitter space are naturally racist. आप उसको project नहीं कर सकते हैं to a population. I don't understand why everyone is here to change my topic and my question. I mean, people are, I'm not changing. I'm the just same saying point. you have to be more precise in your presentation. That's all I'm saying. You are shifting I goalposts think from here to there. Trojan, That's all. Trojan, I think you do not really have a fair. can I kind of butt I'm in? done, by I'm the way. really I'm sorry. done. I never do that. No, Trojan, hang on. Everybody hang on, please. So, Trojan, there is a simple Trojan, thing. एक मिनट, देवांशु एक मिनट. Yeah. हाँ बोलो. There is a simple thing. There is a topic which is being kept on, which is kind of concise and to the point. Why Pakistani ex-Muslims are naturally racist? Is there a difficulty to understand that? See, even I would want to kind of understand like why. And essentially, I am in the space for that reason. If you have any kind of answers towards that, would really appreciate if you can contribute. Thank you so much. Thank you for keeping it precise and quick. मेरा तो एक ही लाइन था In all, विश्वा जी, जो आपने बोला था कि जो इस्लामिस्ट, ठीक है, आप प्रोग्रेसिव हो गए, इस्लाम छोड़ दिया, मे बी एक्स मुस्लिम्स आर मोर प्रोग्रेसिव एज कंपेयर टू मुस्लिम्स, बट व्हाट इज देयर वर्ल्ड व्यू टुवर्ड्स अदर्स? मतलब जो इस्लामिस्ट कैरी करते हैं देयर फीलिंग टुवर्ड्स हिंदूज और क्रिश्चियंस, आर एक्स मुस्लिम नॉट कैरिंग दोज बायसेस, or they have left those biases? We feel they are carrying the same biases and same worldview which Islamists are doing it. So they are no better for outside world. They may be better among themselves. They claim that they are better. My counter is that they will be less biased, being a little bit more rational. That's my claim. well, the reality test goes other way, and that is the problem, and that's why I'm asking this question.
But If you are being claiming rational that you are doesn't help in racism, na yaar. exactly, the reality is not matching up to your claim and assumption, Trojan. You may be talking about yourself. I appreciate it. The Trojan Herbert Spencer was also he also believed in eugenics and he was a racist, but he was intellectual. He was rational. Look, all I'm So saying is there is no. racism doesn't mean that racism doesn't mean that you will not be rational at all. Look. All I There is a high possibility that you will be irrational because there were a eugenics center in USA. Siemens was also into eugenics. right. Europe was very much hellbent into eugenics. So you cannot say that rationality will wipe out racism. I'm not suggesting that dystopia. All I'm saying No, is, I'm not saying that you are suggesting. You're saying it. You're not suggesting. okay, what I'm saying is what my opinion is. There is no data or even poll to support my opinion. It is just my opinion versus your opinion. And so that's why we are even talking, right? We are not talking facts here because there is no data or evidence to support it. That's all. ये तो मेरा opinion है. जैसे कि आपका Okay, opinion है. fine. Trojan, आपकी बात आ गई है. Thank you for sharing. Next time, please join from computer. Find a good mic so that we can hear you more. Actually, Clearly. I'm on a computer and I have a aviation class mic. I don't know. Twitter का problem होता है कई बार. Right. So maybe the aviation class mic is not suitable for this non-aviation type space. अच्छा ये racial It argument sounded like नहीं. he's a pilot speaking from the Okay, cockpit, fine, to be fine. honest with you. We'll Yeah. join your Okay. classes, Trojan. If it is for free, then we'll Okay, join. let's go back to the topic. I think Kohinoor's hand is up, but she's not there. So I want to conclude this and wrap it up. I've been running this space since more than 2 hours. I really want us to all acknowledge the fact that ex-Muslims from Pakistan are as ignorant as their religious masters. There is a strong linkages of religious baggage that carries on. This self-righteousness, holier than thou attitude actually comes from the religious superiority. Monotheism is more rational than polytheism. Nature worshipping is regressive, is voodoo, it's black magic, it's anti-science. These all belief systems are unscientific, highly unscientific. Nature worshipping is the most scientific way of finding connection within your body to the rest of the nature around you. So I want everybody to be reminded that these people, whomsoever claim to be their superior intellect because they have given up on a regressive thought ideology of Islam, it doesn't make them smart overnight. These people have made a good beginning, no doubt, but they do not have given up on being obnoxious as their fellow religionist. In fact, to be honest with you, a religious person will not be obnoxious in your face because they want to convert you. So they understand the value of being nice to you so that you can buy their religion. Because for him, he looks for a long-term benefit. A non-religious guy is outrightly obnoxious because he has nothing for him to achieve on the heaven. So for him, his ego is supreme. So the ego-driven, ego-supremacist people are not spiritual, neither spiritual nor progressive. They are just a blowing their own trumpet type of self-proclaiming prophets of truth, which is also very recent to them. They claim to be scientific in terms of their attitude, but they lack the scientific attitude as such, because scientific attitude is all about being transient, believing in the transition or dynamicism of truth, not remaining stuck with one truth and claiming that rest of everything is untruth. The multitudinalness of truth, the multiplicity of truth is experience practiced in the so-called polytheistic whom they loathe upon. African people, tribal people in India, nature worshipping people, polytheistic people of Latin America, the tribals of Mayan, Inca, the tribals of Europe, and the tribes of entire Asia are actually the most
scientific people because they live in the harmony with nature. They are not the one who invented technology that is exploiting the nature and making this earth unlivable for other species. So I really want us to have that confidence when we debate with these so-called superiority suffering ex-Muslims, that they are the least scientific mindset holding people. They are as vulnerable as their fellow religionist, ex-religionist, whom they consider as their family members. वे भाई इस्लाम तो छोड़ते हैं लेकिन रिलेशनशिप तो है ना, तो वो कैरी ऑन होता है। जब तक ये लोग अपने कल्चर को ही अल्टर नहीं करेंगे जो इस्लाम से इनके ऊपर इम्पोज किया गया है, तब तक इनकी मुक्ति नहीं है। ये चोला बदल करके अगर आत्मा बदल जाती तो कहना ही क्या था। ये आत्मा से उस रिलीजियसिटी के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं। तो ये चोला कोई भी पहन ले, इनकी मजहबी जहनियत नहीं बदल सकती, और वही ये कहीं ना कहीं बाहर दिखती है। तो मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि आप लोग कभी भी इन लोगों को कभी भी ये ना कहने दें कि हम साइंटिफिक एटीट्यूड वाले, हम रैशनल लोग हैं। दे आर नॉट, दे आर इरेशनल पीपल एंड दे आर इनहेरेंटली रेसिस्ट, एंड कॉल देम आउट। क्वेश्चन करो इनके ऊपर। ये सवाल नहीं बनता है कि भैया ऐसा क्यों इन्हीं क्यों कर रहे हो, उनको क्यों नहीं कर रहे। भाई वन पीस एट ए टाइम। मुझे तो पूरी पाई खानी है, लेकिन पीस पीस करके खाऊंगा। पहला पीस मुझे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम के ऊपर है, क्योंकि दे क्लेम टू बी प्रोग्रेसिव। भाई इस्लामिस्ट जो है ना, वो अपने आप को प्रोग्रेसिव क्लेम नहीं करता। वो कहता है जो है वो तो ट्रुथ किसी और ने बोल दिया, मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, अकल ही नहीं है। पर ये तो क्लेम करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव है, इसीलिए हम इनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। So please don't take this personally. If you are an ex-Muslim and individually you're not racist, thank you very much, congratulations. But mark my word, if you don't give up this, don't be watchful of this Islamic culture and worldview seeping into you, it's a matter of time your progeny will gonna follow the Islamic worldview. The Islamic worldview has to go away. And religion is a human-made creation. Culture is an organic process. It is strongly associated with the land and the place you belong to. So with that note, I'm going to end this space. I'm sorry. करमवीर भैया की आप नकल अरे नहीं भैया करें कभी अरे यार एक तुम पाकिस्तानी एक साथ बात एथियस्ट मत की करो। बात भी सुन लो। इतना आपने झड़प मार दिया पाकिस्तानियों के ऊपर, ये मुझे नहीं, बहुत देर से, समझ आप थोड़ी देर से आए हैं। ऐसा है कि आप अभी अभी आपने मजहब को छोड़ा है। हम ऐसा तो है ना भाई कि बरसों से इनके आप साथ डिबेट मजहबी कर रहे लोगों हैं। की तरफ बातें आप कर रहे हैं, और अगर दूसरा एग्जैक्टली वाला ये आपको भी बोलने ये की भी मैं कोशिश आपकी करे ये भी मजहबी बन गए हुए यही हैं। बात है ना, मजहबी मजहबी लोगों की। लोगों की ये ऐसा है ना कि अगर आपके ट्रुथ को हम नहीं माने नहीं, तो हम झूठ आपका बोल ट्रुथ रहे हैं, नहीं ठीक ट्रुथ है। तो नहीं, ट्रुथ ये भी होता है ना मेरा आपने भी भाई। बहुत सारी आपको बातें ऐसी कौन की सा हैं जो ट्रुथ? आपके मजहबी सवाल लोग को करते अगर हैं। हम नहीं माने, मजहबी लोगों की आपके तरफ बातें आप आपकी कर रहे हैं ये कि भैया आपको आप हमारी आपकी बात मानो, जहनियत के वरना ऊपर आप अगर हम जो क्वेश्चन हो, करें, जो आप साइंटिफिक ही नहीं है, आप वो ही नहीं है, आप ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं, हाँ, दूसरों की बात ये नहीं भी सुनने हो को रहा आप आपने जो तैयार साइंटिफिक, नहीं है। डिमांड्स नहीं हो की है भाई। ना, एक्स मुस्लिम ये कोई भी साइंटिफिक आप नहीं सुने है। मेरी बात। मुझे लास्ट वर्ड कहने से पहले कि आप स्पेस खत्म करें, आपकी भी नहीं नहीं, आपकी तो ट्रेन रुकती नहीं है दिया जी। आपको तो मैं अब नहीं बोलने दूंगा। आप बोलिए जितना बोलना था। आप इससे ज्यादा मैं आपको नहीं सहन कर सकता। आपको मैंने लास्ट वर्ड दे दिया, आप फिर चली गई थी, वापस आई हैं। आपको किसी दिन और सुना जाएगा। रहा सवाल दूसरों को मजहबी कहना, देखो मजहब में आप बैठे थे, अभी आपको सुबह सुबह आंख खुली, आप छोड़ के आए हो। हम पहले भी ट्राइबल थे, अभी भी ट्राइबल हैं। हम नेचर वर्शिपिंग पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। हम अपने एंसेस्टर्स को मानते थे। वो बड़ा रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यहाँ बैठा आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एंसेस्टर एग्जिस्टेड थे। मैंने किसी अल्लाह को देखते नहीं बनाया, देखा नहीं बनाते हुए इंसान को। पर मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, प्रूवन है कि मेरे लेकिन एंसेस्टर। आपको भी सोचने की जरूरत है कि आप भी कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल बताऊं, पे अगर हैं। आप इसको मजहब बोलते हैं, आप भी एक्सट्रीम लेवल पे हैं। सिर्फ मजहबी लोग एक्सट्रीम नहीं होते, अरे मेरे पास तो प्रूफ है जो कि मैं गैर एग्जिस्ट मजहबी करता हूँ लोग बिकॉज होते ऑफ माई हैं वो भी एंसेस्टर्स। एक्सट्रीम होते हैं। और फिर तो आपकी बातों में मुझे वो एक्सट्रीमिज्म नजर आया है। आप ये आपकी कोई नहीं कह बातों से सकते एक्सट्रीमिस्ट मुझे कि तो अगर भाई, आप आपकी किसी आप बातों खुद से मजहब मुझे एक्सट्रीम। ये नजर आता है कि आपने इस्लाम तो छोड़ दिया है, लेकिन इस्लामी जहनियत आपको नहीं छोड़ पाई ये है। आपका एक डायलॉग तो हो सकता है। नहीं, डायलॉग नहीं। मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी ट्रेनें रुकती नहीं है। तो आप किसी दिन और मेरे से भिड़ जाइएगा। अभी मेरे पास न इसका न मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपकी उल जलूल दलीलात को तवज्जो दूं, और उसके ऊपर मैं अपनी फिर से म्यूट कर करके आपको मेरी तकरीरें सुनाऊं। तो मैं आपसे रुखसती चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप बाइज्जत मुझे भी रुखसती करने दें, और बीच में आप अपनी मजहबी जहनियत जो आप बताते हैं बार बार, वो मत न बताएं।
सारे एक्स मुस्लिम को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो अभी भी इस्लामिक वर्ल्ड व्यू से मुतासिर है। लेकिन कभी भी स्पेस का ये अंदाज नहीं होना चाहिए जैसे आप बंद करते अंदाज जा रहे हैं आप मुझे, कि आपने मेरा अपनी अंदाज मर्जी की यही बात है। रख दी एंड पे तहम्मुल से काम ले और दिया नहीं मैम, नहीं नहीं तहम्मुल से तहम्मुल मेरा से काम ही अंदाज ले। मैंने काम ले बता रही दिया हूँ, आपको, मेरे हर तहम्मुल अंदाज से में काम ले रही हूँ मैं कि अगर एक मुख्तलिफ बंदा अंदाजों में दोबारा रहता बात हूँ। करने आया है तो वो कह रहे हैं कि अभी मेरा अंदाज बिल्कुल आपको एंटरटेन करना नहीं है, उससे पहले था, अब मेरा अंदाज बदल चुका है, मेरा अंदाज डायनेमिक रहता है। तो मैं लास्ट वर्ड एक ऐसे आदमी को देना चाहता हूँ कि मैं उसको साइंटिफिकली बड़ा प्रोग्रेसिव मानता हूँ, एंड ही इज ए साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन। सो अपरिचित भाई, आप बताइए आपको आखिरी वर्ड्स क्या कहने हैं। प्रभु नमः शिवाय। देखिए, ये जो साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक वाली बात चल रही है ना, इसमें एक चीज जो बहुत बेसिकली लोग इग्नोर कर दे रहे हैं कि अगर ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट कैवेंडिश ने कर दिया 19th सेंचुरी में, तो मैं उसको दोबारा फिर नहीं करूंगा ये जानने के लिए कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या है। मैं उसको किसी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करूंगा और 100 ईयर्स डाउन द लाइन वो वैल्यू टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगी। आज के समय में मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट से अगर ये पूछा जाए कि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें कि बेसिस ये है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे हाईएस्ट स्पीड अचीवेबल है फॉर रियलिस्टिक पार्टिकल्स, वो ऐसा इसलिए था क्योंकि माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट ऐसा कहता था। ठीक है, वो एक बेंचमार्क हो गया, उसको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं। हाँ, डाउन द लाइन ये बात खो सकती है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी रीजनिंग्स जा सकती हैं। हो सकता है 100 साल बाद कोई ये सारी चीजें डिटेल में ना बता पाए। वही शायद जो कोट अनकोट जिसको ट्राइबल लोग कहते हैं कि अरे ये कर रहे हैं, ये नॉन साइंटिफिक है, वो कर रहे हैं, वो नॉन साइंटिफिक है, जब आप ये कहते हैं बिना किसी एवेज्ड एक्सपेरिमेंट या कह लीजिए बिना किसी एक स्पेसिफिक फैक्ट्स के थ्रू, तो आप इस बारे में नॉन साइंटिफिक हो रहे हो। अगर आपके पास कोई असर्शन है तो या तो आप उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं या तो उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ बिना किसी फैक्ट्स के डिस्कार्ड कर रहे हैं तो आप एक बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, नथिंग मोर। तो देयर आर इट्स एंड बट्स जब कहते हैं लोग अपने आप को साइंटिफिक बोलते हैं और किसी एक चीज को डिस्कार्ड करने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम का सहारा लेते हैं, दैट्स वेरी नॉन साइंटिफिक टू बिगिन विथ। मेरे ख्याल से इतना कहना उचित होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल नमस्कार। सही कह रहे हैं। और देखो, दिया जी को बुरा लग सकता है, बिल्कुल है, लेकिन उनको हमने पूरा मौका दिया, सुना, और फिर भी यहाँ आके कहना कि आप मजहबी तरीके से चला रहे हैं स्पेस, अंदाज नहीं है। ये जो होता है ना कि अब इसका लैक ऑफ प्रॉपर वर्ड, हग मूत के छींटना। साले तुमको हमने गेस्ट बना के बुलाया, तुमने हग भी लिया, मूत भी लिया, अब तुम हम पे छीट, मतलब हमको बदनाम करके जाओगे, आपने ज्यादा ही बोलने दिया उनको, है ना। आपने तो ज्यादा ही मैं अब इनका एक्स मुस्लिम का प्रॉब्लम यही होता है ना, इनके अंदर सेल्फ राइटियस इतनी भरी पड़ी है कि इनको अगर कोई क्वेश्चन करे तो तिलमिला जाते हैं। जैसे मौलाना तिलमिला नहीं जाता इनके अकीदे के ऊपर कोई सवाल खड़ा करे कि भाई तूने देखा है जाके कब्र के अंदर के मोहम्मद की लाश को कोई खा नहीं सकती जमीन में, वो तिलमिला जाता है, थूकने लगेगा आपके ऊपर। एक्स मुस्लिम का कहीं ना कहीं इस तरह के बिहेवियर देखने को मिलता है मुझे। ये इस्लामी जहनीत, उसी की मैं बात कर रहा था, और ये सारे लोग उसी से अभी भी उसके कब्जे में हैं। मेरा किसी से कोई जाति झगड़ा नहीं है, कोई मलाल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इस बात को तरजीह देता हूँ कि जब आपको मैं बोलने का बराबर मौका दे रहा हूँ तो आप उसको एक्नॉलेज करें, और अपनी बात अगर मैं कह रहा हूँ कि आप रुक जाएं तो आप रुक जाएं। फिर आप यहाँ पर मेरे पर जोर अजमाइश नहीं कर सकते, मैंने आपसे पैसे तो लिए नहीं इस पेश में आने के। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, ये एक्स मुस्लिमों की ये जो डुप्लिसिटी है इसको कॉल आउट करें। इनकी मजहबी जो जहनीत है वो नहीं छूट सकती, लेकिन डोंट गिव अप होप। आई एम वेरी होपफुल, आशावादी इंसान हूँ। मैं मानता हूँ कि लोग प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हम उनको क्वेश्चन करेंगे, जब हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं चलो इस्लाम के खिलाफ तो बोल रहे हैं, तो ऐसे बात नहीं चलेगी। अब यशेष भाई आएंगे, कुछ लंबी बात करेंगे। आइए यशेष भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? विशेष भाई आ रहे हैं। यशेष भाई आओ, विशेष आओ, बोले क्या कहना चाहते हो यशेष भाई? अरे कुछ नहीं, अभी भाई वो मुझे तो गलती से ऐसे टच हो गया था। यार गलती से नहीं अरे होता ये टच यार क्या आपसे, गलती है। आप किसी चीज को गलती से नहीं टच करते। अरे मैं जेब में रख रहा था फोन, वो टच होके वो हो गया, फिर पता चला स्पीकर पे आ गया। जेब में रखने से टच होती चीजें हो सकता है।
हेलो एपी हाँ जी, होस्ट फरहाना जी, मैं आपकी अब इंटरप्ट नहीं बहुत देर करना से चाह मैं रही, पर मुझे जाना है अपॉइंटमेंट के लिए। मैं आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कि आपने मुझे बोलने दिया यहाँ पे विद गुड पीपल एज योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी एल्स। आई विल जॉइन नेक्स्ट टाइम। इट वाज अ लवली कन्वर्सेशन। बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. That means a lot to us when you say such a beautiful word and part your ways instead of blaming us for being the religious types. And you know, Yeah, he buried someone. So please we have don't to be make sorry fun of for the dead people. They No, I'm not making fun. अरे मैं मजाक उड़ा रहा हूँ ऐसे तो मैंने पर on that note, I'm going कि to end. buried someone बोल रहे हैं मैं क्या है वो यार। हाँ, जो लोग नीचे से बैठे थे उनको लगा था कि हम भी बोलते हैं और बोलने का मौका नहीं मिला। हम आपको अगली बार जरूर बोलने का मौका देंगे, तो आप ऐसे आते रहिए। थैंक यू सो मच।